upper limb is about to end. And next Saturday, you will be facing your first MCQ exam. And then the lower limb will start the week after that. But so that you just don't get bombarded with again names of new muscles, new nerves, and starting the grooming process of kind of orienting you towards the lower limb. In the embryonic stage, both the limbs are like this. Upper limbs turn like this and lower limbs turn like this. Now because the lower limbs turn like this, the flexion of the knee is ulta. इसका flexion ऐसा है, knee का flexion will be like this. The flexor surface are on the anterior side in the upper limb, while on the anterior side in lower limb will be extensor surfaces. So the lower limb, the way we define its different parts, is like this. This will be the thigh from hip joint to knee joint. This is the leg. So normally you must have heard people saying my leg is paining. So when they say leg, मतलब यहाँ से यहाँ तक. But for us, leg is only from knee joint to ankle joint, and this is foot. Same thing happens in upper limb. People saying my hand is paining. Hand is for us only this part. Okay, this is hand. So foot is here. On the anterior aspect, this compartment is the extensor compartment. So if you are in, this is extensor compartment of thigh. Okay, and suppose this is the anterior aspect, and when we are looking at the posterior aspect, this posterior aspect is called as the hamstring compartment. Hamstring. You must have heard of this term hamstring. He had a hamstring pull. Hamstring. Hamstring, hamburger, जो भी नॉनवेज खाते हैं. These muscles are very bulky. These muscles are very muscular, strong, ham muscles. तो उसका जब लोग नॉनवेज खाने वाले बर्गर खाते हैं तो उसको हैम बर्गर बोलते हैं. बड़ा बड़ा टर्म है, मराठी में उसको तंगड़ी बोलते हैं. Of course, I don't advise eating non-vegetarian food at all, because you go to any website, any dietitian, any consultant, everything boils down to veggies, salads, and green leafy vegetables. That's something best for any animal. Any animal. The best food for any animal is what he can eat without cooking. So a cow without cooking, she will eat grass, and a tiger without cooking will eat a deer. Okay, we cannot eat grass. We may be able, but deer definitely we cannot eat without cooking. So आप ऊपर ऐसे हिमालय वगैरह में जाओगे तो उधर कुछ आग जलाने का कुछ सुविधा नहीं. लोग जी रहे उधर 100 साल 150 साल. So they eat roots, fruits, and they nicely survive. Ultimately जब हार्ट का तकलीफ होता है ना तो they are told कि ऑयल फ्री, सलाद खाओ, गाजर खाओ, बीटरूट खाओ. So why wait till that point? ये मेरा खुद का philosophy. And this is what is, advocated by all the dietitians also. So for us, what is the food which we can eat without cooking?
First category is fruits, and second category is salads. तो जो भी ये दोनों पे सर्वाइव होते हैं, you know, they are automatically become lean, thin. Okay, so we should try our best that ये आपके डाइट में सबसे ज़्यादा हो, बिकॉज उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. Now this anteriorly, here are the dorsiflexors or extensors of the foot. Dorsiflexors. And these are the calf muscles. This part is called as the calf. Hamstring compartment, the calf. Okay. And this is the foot dorsal. जो आप ऊपर से जो foot दिखता है, that foot is the dorsal part. And this is called as the plantar surface. मतलब जो फुट हमारा नीचे से जो सोल है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटर. ये था पामर. सोल नीचे क्या है? प्लांटर. वहां पे थंब विल बी कॉल्ड एज हॉलक्स. वहां यहाँ पे पॉलिसिस बोलते थे, पॉलिसिस. वहां पे हॉलक्स. ओके, सो दिस विल बी द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंटीरियर. ये भी एक्सटेंसर है. बट ये जो है ना एक्सटेंशन, इसको डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं. तो इसके लिए उनको कभी कभी डॉर्सीफ्लेक्सर्स बोलते हैं. डॉर्सीफ्लेक्सर्स बोलो, एक्सटेंसर्स बोलो. यही पीछे के बाजू है काफ. सो दिस इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई. दिस इज हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट. These are the extensors of the foot or dorsiflexors. These are the calf muscles, which are plantar flexors. Plantar flexion. ये plantar flexion है. Okay, this is the dorsal surface of the foot, जो आपका शूज के ऊपर है और जो सोल के साथ टच करता है, that is the plantar surface. Now some of the important anatomical landmarks in the lower limb. सबसे पहले तो है हमारा iliac crest. ये हमारा iliac crest होता है जो हमारे बॉडी में जहाँ पे रिबकेज खत्म होता है, जरा ही नीचे आपको एक बोनी क्रेस्ट दिखता है, फील होता है, आइलिया क्रेस्ट. ओके, इसको आप पूरा फील कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एंटीरियर से ये बोनी क्रेस्ट फील होता है, ऐसे पोस्टीरियर. सो दिस इज द आइलिया क्रेस्ट. आइलिया क्रेस्ट इज द प्लेस वेयर वी प्लेस आवर हैंड्स इन अ रिलैक्स स्टेट. ओके, लेकिन एग्जाम में कभी टीचर के सामने ऐसे खड़े नहीं रहेंगे. भले आप कितने भी रिलैक्स हो, आप बोलो कि रिलैक्स होके एग्जाम देने को बोला है सर ने, तो इसके लिए हाँ पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं. ओके, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ये फेवरेट पोज रहता था. किधर भी जाता था, चलता था, विलन के अड्डे पे जाता था. तो आपने उनके ज़्यादा मूवीज नहीं देखे रहेंगे, बट दिस इज हाउ ही यूज्ड टू बी. This is how your books also describe. So this is the iliac crest. ये iliac crest आगे end होता है एक spine पे, and that spine, that छोटा सा spine is called as anterior superior iliac spine. Iliac crest को आगे 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 आप लेके गए. At one point you reach a spine where the iliac crest ends anteriorly. That is anterior superior iliac spine. Anterior superior iliac spine. From this iliac spine to the pubic tubercle. So understand two things. One is pubic symphysis. यहाँ पे pubic symphysis. Pubic symphysis. और यहाँ पे little lateral to the pubic symphysis is pubic tubercle. बीच में है pubic crest. तो running from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle is a ligament called as inguinal ligament. Inguinal ligament. Inguinal ligament. Inguinal
ligament. Is the inguinal ligament. Anterior superior iliac spine से pubic tuber तक. This inguinal ligament exactly lies along the groin. Groin मतलब क्या कि आपने आपका हाथ यहाँ पे ऐसा रखा और आपने आपके लेग को फ्लेक्स किया. तो now my fingers are exactly between at the groin. So this is how inguinal ligament runs. Why I am talking so much about the inguinal ligament? Because इसके above is abdomen. इसके above is abdomen. और इसके below is lower limb. Groin is also grossly groin जो है this part is also उसके above is abdomen, उसके below is the lower limb. So then you start initially removing the skin and then you reach the superficial fascia. And in the superficial fascia here, superficial fascia निकाला तो deep fascia दिखता है. Deep fascia of the thigh, मतलब यहाँ पे आपने अभी deep fascia देखा रहेगा थोड़ा थोड़ा. deep fascia कट कर दे तो अंदर मसल रहती है. ये मसल्स और ये मसल्स साइज में बहुत फर्क है, राइट. ये हमारे क्या चिंटू पिंटू अनलेस वी आर डूइंग टू मच एक्सरसाइज, वो तो अपन इतना कुछ करते नहीं. अब ये मसल्स बिकॉज ये कांस्टेंट एक्शन में रहते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं. देखो दीज मसल्स इन एनीबॉडीज बॉडी आर ऑलरेडी मोर वेल डेवलप्ड कंपेयर टू दीज मसल्स. तो यहाँ पे फेशिया, द डीप फेशिया keeping them together will be more thick, and that is called as fascia lata, L-A-T-A. So the deep fascia of the lower limb is thickened on the thigh, in the thigh, and that is called as fascia lata. By now you know that superficial fascia is fatty. Skin, superficial fascia, deep fascia. ये आपके एनाटॉमी के फ्रेंड्स हैं. कुछ भी रिलेशन याद नहीं आया किसी का तो एंटीरियरली देयर इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. ओके. जैसे फार्माकोलॉजी में आप नेक्स्ट ईयर जाओगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, any side effects of any drug, nausea, vomiting, ये आपके फ्रेंड्स. इतना वो हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं कि एंटी वॉमिटिंग ड्रग के साइड इफेक्ट्स में भी लोग लिख के आते हैं nausea, vomiting. फिर हम बुला के बोलते हैं बाबा ये nausea, vomiting के ड्रग से प्रिवेंट करने वाले, उसमें तो मत लिखो. हाँ चाचा, ये दो जगह नहीं लिखने का, ठीक है. सुपरफिशियल फेशिया इज फैटी, डीप फेशिया इज फाइब्रस. आपको जनरल एनाटॉमी में सिखाया रहेगा ना, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. डीप फेशिया पे शॉर्ट नोट वगैरह आता है कभी कभी, ऐसे को देख रहे हैं. डीप फेशिया इज फाइब्रस. दो जगह पे डीप फेशिया एब्सेंट होता है बॉडी में. वन इज फेस, सो दैट वी कैन स्माइल. ओके, नहीं तो डीप फेशिया एकदम अंदर रख देते. एंड अनदर इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, टू प्लेसेस इट इज एब्सेंट. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ताकि हम अच्छे से खा पी सके, एंड फेस बिकॉज उसके बाद स्माइल कर सके. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हैज टू बी सॉफ्ट. ये जो लोग जिम जाके 6 पैक 8 पैक जो बनाते हैं ना, दैट इज नॉट एडवाइसेबल एज पर आवर इंडियन वैदिक साइंसेस और एंशियंट इंडियन साइंसेस, बिकॉज
बिकॉज क्या है कि मेरे लेक्चर में नहीं, सो यहाँ पे हमारा सारा फूड का प्रोसेसिंग होता है, खाते हैं तो थोड़ा सा, सो इट कैन नॉट बी केप्ट सो टाइट। इसके लिए आप इवन हमारे योगी देखो, रामदेव बाबा, ये वो, तो उनका एब्डोमेन इज सॉफ्ट, दे आर नॉट फैट पीपल बट एब्डोमेन इज सॉफ्ट, इट हैज टू बी केप्ट सॉफ्ट, इट हैज टू बी। हाँ, ये थोड़ा सा बल्ज होता है बिकॉज हम बिल्कुल भी इसके एक्सरसाइज नहीं करते, तो थोड़े से करेंगे तो अच्छा है। जैसे simple exercises to keep this abdominal wall flat is lift your one leg at a time, hold it, okay? But हाँ, यहाँ पे डिफेशिया नहीं, यहाँ पे डिफेशिया होता था तो हमारे एब्डोमेन्स भी ऐसे फ्लैट होते थे सबके, लाइक फ्यू एक्ट्रेसेस, नाम बोलो, आपका जनरल नॉलेज बोलो जल्दी से। हाँ, अरे वो फ्लैट एब्डोमेन किसका है? हाँ, दिशा, क्या बोले, दिशा, दिशा पटनी। और तो नेक्स्ट टाइम दिशा पटनी, शिल्पा शेट्टी, ये लोग एकदम नोन फॉर देयर फ्लैट टमीज, देखते तो बोलेंगे काश डीप फेशिया होता तो हमारे भी पेट ऐसे होते थे, बट डीप फेशिया एब्सेंट है। तो अप्रिशिएट करो कि डीप फेशिया एब्सेंट होने के बावजूद भी देखो फेशिया लाटा, दिस फेशिया लाटा ऑन द लैटरल एस्पेक्ट, ऑन द लैटरल एस्पेक्ट और थिकंड होता है, मतलब ये थिकंड है ही डीप फेशिया, इसके बाद वो और थिकंड है। ओके, डीप फेशिया में बात कर रहा था, तो डीप फेशिया के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो वो मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया में ये आपको 2-3 चीज लिखना पड़ेगा। हाँ, जैसे ये रेटिनाकुलाई है, दिस इज कॉल्ड एज इलियो, बिकॉज ये इलियम से निकलता है, इलियो, और टिबिया तक जाता है, इलियो टिबियल ट्रैक्ट, इलियो टिबियल ट्रैक्ट। वो ऐसा थिक होता है कि उसके ऊपर मसल्स इंसर्ट होते हैं। देखो यहाँ पे हमने पामरिस लॉन्गस गेटिंग इंसर्टेड ऑन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड देन टू पामर एपोन्यूरोसिस, तो हमने उसको एकदम चिंटू पिंटू ये बोला। दिस, इसके ऊपर एक और रीजन जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, जो कि लोअर लिंब में इंक्लूडेड है, and that is the gluteal region, gluteal region, जिसको लेमैन्स टर्म में बटक बोलते हैं, बटक, ओके, the gluteal region, so the gluteal region is also there. So यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मसल जो कि बॉडी का सबसे पावरफुल मसल, वो ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे इंसर्ट होता है। मतलब सोचो एक डीप फेशिया का थिकनिंग, ओके, एंड देयर इज वन मोर मसल टेंसर फेशिया लाटा, ओके, ठीक है। सो ये है फेशिया लाटा। तो ये फेशिया लाटा में एक ओपनिंग होता है, बिकॉज ये इतना थिक है ना, बिकॉज ये इतना थिक है तो नर्व्स वगैरह उसको पियर्स करके आना बहुत मुश्किल है। नर्व्स फिर भी आ सकते हैं, वेन्स, तो वेन्स और आर्टरी जो सुपरफिशियल है, आर्टरीज को बाहर आने के लिए और वेन्स को अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज सैफेनस ओपनिंग, सैफेनस ओपनिंग, सैफेनस ओपनिंग। बिकॉज हमारे बॉडी में एक वेन होता है जिसका नाम है ग्रेट सैफेनस वेन, ग्रेट सैफेनस वेन। वो हमारे यहाँ से चालू होता है
इधर से चालू होके ऐसा 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 होके फिर वो सैफेनस ओपनिंग में से अंदर चला जाता है, ग्रेट सैफेनस वेन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ये ओपनिंग एकदम ऐसा एकदम ओपन नहीं रहता है, बिकॉज फिर हर्निया हो जाएगा। हर्निया तो होता ही है यहाँ पे, बट हर्निया नहीं होए इसके लिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा मेश लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिबिफॉर्म फेशिया, क्रिबिफॉर्म फेशिया विच फॉर्म्स द मेश इन द सैफेनस ओपनिंग। और उसके बीच में से वगैरह ऐसे वेन्स आर्टरीज बाहर आते हैं, एक आर्टरी एक वेन, एक आर्टरी एक वेन। वेन इसमें एंड होगा और आर्टरी जो है, आर्टरी जो है दे, यहाँ पे बोन कौन सा है, फीमर, तो यहाँ के आर्टरी का नाम होगा फीमोरल आर्टरी। नाम सुना है आपने फीमोरल आर्टरी? तो ये सारे फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस रहेंगे और दे विल drain into, veins will drain into saphenous, great saphenous vein. Great saphenous vein will drain into femoral vein. तो यहाँ पे होगा अंदर femoral vein, उसके बाजू में femoral artery और उसके बाजू में femoral nerve. ओके, ये हम जैसे जैसे आगे डीप जाएंगे we will study that. To start with these, there are some cutaneous branches. मैं सब आपको easy सिखा रहा हूँ पहले। यहाँ पे आपको cutaneous nerve मिलेगी, which will be called as lateral cutaneous nerve of thigh. यहाँ पे एक रहेगी, उसका नाम रहेगा medial cutaneous nerve of thigh, और यहाँ पे एक रहेगी, उसका नाम है intermediate cutaneous nerve of thigh. Lateral cutaneous nerve of thigh, which is a branch of lumbar plexus. तो यहाँ पे brachial plexus था. Lower limb you will come across two plexuses, lumbar plexus and sacral plexus. Lumbar plexus and sacral plexus. ओके, उसे ऐसे उसने दो प्लेक्सिस के नाम सुने, उसने हाथ कम तुझा एप्रन कुठे आहे? पिवळा शर्ट, एप्रन तुझ्या मागे, एप्रन त्याच्या मागे, एप्रन. Have received a link on your mobile, the NAT Academy group. 2 files have been sent as a link. One is general anatomy, the other is upper limb. Anybody has brought the gross anatomy journal? Yes, let's pass the journal. So there is one nerve, ilioinguinal nerve, apart from these three cutaneous nerves. This nerve is a branch of, lateral is a branch of lumbar plexus. These two, intermediate cutaneous nerve of thigh and medial cutaneous nerve of thigh, are branches of femoral nerve. Ilioinguinal nerve is branch of lumbar plexus, and genitofemoral nerve is also branch of lumbar plexus. बहुत अच्छी नर्व है जेनाइटोफीमोरल नर्व, उसके दो ब्रांचेस है, जेनाइटल ब्रांच, फीमोरल ब्रांच। ऐसे बहुत अच्छे लोग रहते हैं हमारे बॉडी में। जेनाइटोफीमोरल नर्व, व्हाट आर द ब्रांचेस? जेनाइटल ब्रांच एंड फीमोरल ब्रांच। तो यहाँ पे फीमोरल ब्रांच और जेनाइटोफीमोरल नर्व।
अभी भी मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं हो रहा है वो 3 नर्व्स के 3 ब्रांचेस के नाम बताने। उसके पहले मैं आपको इस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स के नाम बताता हूँ। एक मसल जो ऐसे डायगोनली रन करके इनको 2 कंपार्टमेंट्स में, ऐसा ऑफिशियली वी डोंट कॉल इट 2 कंपार्टमेंट्स, दिस मसल which runs diagonally from anterior superior iliac spine to the medial side of the thigh, this muscle, its name is sartorius. Okay, sartorius. There are 4 muscles above sartorius, there are 4 muscles below sartorius. पहले 4 मसल्स, मतलब ये sartorius इतना नहीं रहता है, मैंने ये जो स्पेस बनाया है वो तो ऐसा रखे, इधर एकदम छोटा सा स्पेस रहता है। उसमें से एक मसल इज रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस एब्डोमिनस आपने सुना है, जिसपे टेंडिनस इंटरसेक्शंस होते हैं, जिसके कारण ये 6 पैक 8 पैक होता है। Okay, so no more you are going to call biceps as biceps. Biceps brachii, biceps femoris is here. Rectus abdominis is here, rectus femoris is here. Okay, the word rectus means straight. Rectus femoris. उसके नीचे there are 3 muscles. VI. VI क्या है? VM. VI बोर्ड सब जगह दिखता है ना आपको, क्या है VI? वोडाफोन आइडिया। उसके बाद आप VI बोर्ड इसके बाद देखोगे तो आप बोलेंगे वास्टस इंटरमीडियस। वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस। ये इंटरमीडियस मैंने ऐसा सेपरेटली दिखाया है, बट रेक्टस फीमोरिस ऑलमोस्ट उसको कवर करता है। 4 मसल sartorius के बिलो है, 3 वास्टाई, 3 वास्टाई। व्हाट आर द 3 वास्टाई? वास्टस लैटरलिस, न्यूरोनाली नहीं, इसको बुलाओ। नीचे करना चाहिए। तू अरेंजमेंट करना, तू माझं होत आलंय। ओके, तो इसके बाद आप VI का स्टोर देखोगे तो क्या बोलोगे? वोडाफोन आइडिया, वास्टस मीडियलिस, वास्टस वोडाफोन आइडिया, फिर वास्टस। ऊपर कुछ मसल्स है 4। एक का नाम है अडक्टर लॉन्गस। क्या नाम है? अडक्टर लॉन्गस। दूसरे का नाम है पेक्टिनियस। क्या नाम है? पेक्टिनियस। तीसरा इतना बड़ा नहीं रहता, उसका खाली टेंडन दिखता है, मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, रेगुलर डायग्राम्स में आपको बाद में दिखाने वाला। इसका नाम है श्वास मेजर। सुहास नहीं बोलने का, और श्वास अपन जो टोंटो के चक्कर में श्वास मेजर। ओके, और प्रोजेक्टर ऑन करायला लागेल। आइलियाकस, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर, इलियाकस। और मैंने आपको बोला था जाते जाते मैं आपको 3 नाम बताते जाऊंगा। सुपरफिशियल, तीनों के इसमें एक
सेम है, सुपरफिशियल सुपरफिशियल सुपरफिशियल। तीनों में सुपरफिशियल, वेन और आर्टरीज। आर्टरीज दिस आर अराइजिंग फ्रॉम femoral artery, veins are ending in saphenous vein, they are going, saphenous vein is ending in femoral. Superficial external pudendal, ऐसा उसका नाम मैंने नहीं रखा है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल फ्यूडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, फ्यूडेंडल रेफर्स टू जेनाइटल्स, इसके लिए सुपरफिशियल एक्सटर्नल फ्यूडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल circumflex ileum, going towards, one is going towards the abdomen, so called as superficial epigastric, one is going towards the genital cord, superficial external pudendal, one is going towards the iliac, so superficial circumflex iliac. With that I stop here. Thank you.